maximum aerodynamic pressure, where the vehicle faces its largest aerodynamic loads as it flies through this zone at Mach 1.5 at an altitude of nearly 9 kilometers. विक्रम 1 ने सफलतापूर्वक मैक 4-1 क्षेत्र पार कर लिया है और दल काफी +1 minute. Short to Minato. दल काफी उत्साहित है इस समय और विक्रम 1 प्रथम चरण के आगे बढ़ रहा है और हमें श्रीहरिकोटा व पोर्ट ब्लेयर पृथ्वी स्टेशन से मजबूत दूर संकेत मिल रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी खबर है. That's right. We are at a downrange distance of 22 kilometers with an altitude of 34 kilometers. And on your screens right now are excellent onboard camera views from the vehicle. And we can also see quite nominal chamber pressure values on the MCC screen. The vehicle is currently at an altitude of 50 kilometers. और यहाँ पे प्रथम चरण का प्रतिकरण हो चुका है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन भी प्रारंभ हो चुका है. This is quite a major achievement for the nation, with the vehicle successfully +2 minutes. separating stage 1 and the ignition of stage 2 as well. द्वितीय चरण अपना सफलतापूर्वक कार्य पूरा कर रहा है और प्रथम चरण का दहन अथवा प्रतिकरण समाप्त हो चुका है. The vehicle is at an altitude of 89 kilometers, traveling at 2.6 kilometers per second. Of course, our target velocity for today is 7.6. S2 performance normal. We've just heard call out that the S2 performance or the stage 2 performance is nominal. ये एक ऐतिहासिक क्षण है पूरे भारत और निजी अंतरिक्ष यात्रा का. This vehicle has crossed 100 kilometers of altitude, which is the notion of edge of space, and we have reached space, guys. Congratulations, Vikram 1 is in space. हमारा यान अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है. And we've had call-outs of separation of the payload fairing. We have successful payload fairing separation. It's nearly at an altitude of 120 kilometers, and the protective fairing is no longer required and has been cleanly separated from the launch vehicle. और यहाँ पे द्वितीय चरण का भी प्रतिकरण संपन्न हो चुका है और तृतीय चरण का प्रज्वलन भी प्रारंभ हो चुका है. That's right, Akhil. We've had successful ignition of stage 3. The vehicle is currently at 157 kilometers above the Earth's surface. It is 355 kilometers downrange, traveling at nearly 4 kilometers per second. Now, the telemetry will switch over from Shar to Port Blair and further to Bogor. अब यान अपनी अंतरिक्ष यात्रा पर निकल चुका है. तृतीय चरण का प्रज्वलन चालू है और उस +4 minutes. की प्रतिक्रिया नियमित रूप से चल रही है. And as you can see on your screens, we have near exact following of the intended trajectory. The two lines on your screen essentially indicate the current performance of the vehicle, and it closely matches with prediction. This is on your screen on board from stage 3. What you see is the rocket plume and the nozzle, and Earth, our home. What a beautiful view. क्या सुंदर दृश्य है हमारी पृथ्वी का. S3 performance normal. और तृतीय चरण का परफॉर्मेंस अब नॉर्मल है, या कि सामान्य रूप से तृतीय चरण का संचालन प्रारंभ हो चुका है और चल रहा है. That's right. We've had call out that the stage 3 performance is nominal. +5 minutes. So stage 3 has a propellant loading of 2.5 tons, and we've had burnout of the stage 3 motor as planned at S3 T plus burnout. 5 minutes. Yes, we've gotten confirmation that S3 has burnt out, and now we're entering a planned coast period, something that lasts for 140 seconds, in which it's called as combined coast. Coasting is normal. Right, so we've got call out that the combined coast is nominal. This will last for roughly 140 seconds, where stage 3
is not producing thrust, but it's connected to the vehicle and it's going to coast as a single body. All of this is done to manage the altitude of the vehicle and also control where the stage will re-enter the Earth's atmosphere before splashing in international waters Plus in a 6 safe minutes. and planned manner. And jubilant views from the Launch Control Center, where the teams are extremely elated and excited. और मिशन नियंत्रण केंद्र और लॉन्च नियंत्रण केंद्र से आपको दृश्य दिखाई दे रहे हैं। सभी यान परीक्षण दल अत्यंत ही प्रसन्न है और यहां पर जो प्रसंग है वो एक उत्सव का प्रसंग बन चुका है। एक ऐतिहासिक क्षण भारत के निजी अंतरिक्ष उड़ान का विक्रम-1 यान अब अंतरिक्ष में स्थापित हो चुका है। तृतीय चरण अब अपने कोस्ट फेज पे है और ये कोस्ट फेज अभी आप कैमरा व्यूज देख सकते हैं अपने प्रक्षेपण पर्दों या मोबाइल स्क्रीन्स पर, जहां पे आपको धरती का एक सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। As we can see on our screens right now, it's really amazing to see that Vikram-1 as of now is going along its intended trajectory exactly as expected. Our plots are really overlapping. The predicted velocities and the current flight velocities are exactly matching. And aren't you guys speechless right now? I mean, yeah, मेरे पास शब्द ही नहीं है, मतलब ये मैं निशब्द हो चुका हूं। That's right. We are approaching another point wherein S3 will separate. S3 is separated. और तृतीय चरण का प्रतिकरण भी हो चुका है। And you see wonderful views of S3 separating. And now we have combined coasting has ended and stage 4 will now coast on its own for the next 130 seconds. So stage 4 will now fly on its own, essentially. And the control thrusters on the OM will be S4 continuously posting turning normal. on and off to maintain the attitude of the stage, making sure that it is pointing the right way. This also ensures that the antennas can maintain connection with the ground station and the satellite can be pointing in the right direction. That's right. So one unique thing that has been done during separation is we've essentially fired all 4 of our Raman Mini thrusters to sort of push stage 4 away from stage 3. And that just sort of guarantees that there is some minimum separation between the two. अब आने वाला जो चरण है वो द्रव्य प्रणोदन पर आधारित होगा, जिसको हम कक्षा स्थापन या समायोजन खंड ऑर्बिट एडजस्टमेंट मॉड्यूल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें द्रव्य प्रणोदन की अवस्थाओं से संचालन होगा जो मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन और डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड पे आधारित है। 9 minutes. उसके साथ यान के घूर्णी नियंत्रण के लिए, जिसे कंट्रोल थ्रस्टर्स कहते हैं हम लोग, उन रामन मिनी 50 न्यूटन, वो भी मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन और डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड पर ही आधारित है। उसके अंतर्गत हमारे पास छोटे कोल्ड गैस थ्रस्टर्स जो कि नाइट्रोजन गैस पर आधारित हैं, वो भी कक्षा समायोजन खंड पे स्थित हैं। S4 ignited. And we've heard call out that S4 or stage 4 has ignited successfully. और चतुर्थ और अंतिम चरण का भी प्रज्वलन हो चुका है। The liquid engine has come alive over 400 kilometers above the Earth, beginning a burn that will last for more than 6 minutes. During this phase, the vehicle will steadily accelerate from about 6.68 kilometers Plus 10 per minutes. second to nearly 7.64 kilometers per second, delivering the precise velocity needed to achieve its planned 450 by 450 kilometers circular low Earth orbit at a 60-degree inclination. और यहां पे आप देख सकते हैं कि प्रक्षेपण नियंत्रण केंद्र में उत्साह का एक प्रसंग आ चुका है और आपके ऑन बोर्ड प्रक्षेपक पर्दों पर हम देख सकते हैं कि पेलोड्स या जो उपग्रह हैं उनका एक चित्र
यहाँ पे सारे उपग्रह अपने स्थान पर स्थित हैं। That's right, Akhil. We've also had seamless transition from the S4 Port Blair performance to normal. the Bogor station, and now we are receiving strong telemetry from the Bogor as well as the Yatharga stations in Indonesia and Australia, Plus 11 respectively. The current altitude of the vehicle is 426 kilometers. Our target is near 450. We're traveling at 6.5 kilometers per second. And like we said earlier, OAM is essentially going to fire its Raman 2 engine for a cumulative burn time of nearly 6+ minutes. So this is the longest burning. It's the smallest. ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ but it ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ burns ಹೊಸ for the ಕ್ರಾಂತಿ. longest period ದೇಶದ of time. ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ರಾಕೆಟ್ ಇದು. And, ನಭಕ್ಕೆ ಹಾರಿದೆ given to us ವಿಕ್ರಮ್ by 1 Raman 2, ರಾಕೆಟ್. our ಪೂರ್ಣ main engine ಪ್ರಮಾಣದ for the ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಈ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದು. ಇಸ್ರೋದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ 1 ಏನಿದೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಉಡ್ಡಯನ ಆಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಉಡ್ಡಯನ ಆಗಿರೋದು ಇದು. me and my team, ವಿಕ್ರಮ್ we worked ಒಟ್ಟು on this engine to get it going. 4 and ಹಂತಗಳನ್ನು finally taking us to ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದು. space. 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ This ಘನ engine ಇಂಧನ wasn't an ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, easy design. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಮತ್ತು Raman ತ್ವರಿತ 2 ಸಣ್ಣ generates ಉಪಗ್ರಹಗಳಾಗಿದೆ. 1500 newtons of thrust. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಕ್ಯಾಬ್ And, ಹಾಗೂ it ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ employs ಅಂತಾನೆ 3 different types ಇದು of cooling. ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. As if one wasn't ಸಣ್ಣ enough, we had ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ to put in ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವಂತಹ 3. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ So we ವಿಕ್ರಮ್ have 1 ಗಿದೆ. regenerative cooling. Then we 4 have ಹಂತದ radiative ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ cooling, ಎಂಜಿನ್ and we ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ have film ಇದು cooling. ಹೊಂದಿದೆ. And all three of 4ನೇ these, ಹಂತದಲ್ಲಿ 3D need to ಧ್ರುವ work seamlessly ದ್ರವ ಇಂಧನ in ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು sync ಹೊಂದಿದೆ. to deliver this 4ನೇ phenomenal ಹಂತಕ್ಕೆ outcome. ರಾಮನ್ 1 ಎಂಬ So, I'm ಹೆಸರನ್ನ kind of ಇಡಲಾಗಿರುವುದು. glued to the screens right 3D now. ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ You ಲಿಕ್ವಿಡ್ might see me ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನ peeking over ಈ to try to ವಿಕ್ರಮ್ see 1 what the ಹೊಂದಿರೋದು. chamber pressure, what the thrust and what the 450 temperatures are ಕಿಲೋಮೀಟರ್ like. ಎತ್ತರದ But I think I ಕಕ್ಷೆ might have to ತಲುಪಲಿರುವಂತಹ hold ರಾಕೆಟ್ for ಇದು. a bit, 4 ಹಂತದ and look at ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ that data ಎಂಜಿನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು in a little ಹೊಂದಿದೆ. while. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಉಡ್ಡಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ರಾಮನ್ 1 ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3D ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತದ್ದು. ದೇಶದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ While I was ಉಪಗ್ರಹ talking ಇದು. about Raman ನೀವು 2, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ and how ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ difficult it was to ಎಲ್ಲಾ essentially design an engine ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು small. ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡ Like ಫುಲ್ I ಖುಷಿ said, it's a ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. relatively ಯಾಕಂದ್ರೆ small ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಿ engine. ನಭಕ್ಕೆ ಹಾರಿದೆ. And